के लिए उमंग, भरते हैं आशा की उड़ान, चूमते हैं पर्वतों की चोटियों को और सागर की गहराइयों को। तो चलो मेरे संग आशा की उड़ान भरने। मंजिल मिल ही जाएंगी एक दिन, मंजिल मिल ही जाएंगी एक दिन, इसी हौसले से चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। वेलकम टू द उमंग रिजल्ट इवेंट। उमंग इज द आउटकम ऑफ ardent zeal. Umang is the outcome of a dream. Umang is an outcome of a mission. Umang is an outcome of a manifestation seen by the passionate eyes and vision of a principal Madam Mrs. Daruwala. I, Mrs. Saroj Jijina, and my lovely host, Ms. Prachi Parikh, are your host and host for today's program. We warmly welcome you all to our today's function with a heart full of love. Today you will witness the results of Umang Festival of Sir C.J. High School. So stay tuned and cooperate with us till the end of the event. Undoubtedly, we have talented students in every grade of our school. In this talent hunt, we all saw talent from dancing to drama, song and speech to sports activities and many, many more. Without taking your precious time, let us begin. Saroj sir, I want to ask you something. Yes? Why do we dance? Prachi miss, we dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hope, we dance for screams. We are the dancers and we create dreams. So true. Dance is the most beautiful form of expression of humans' feelings. Dancers are the messengers of God. We witness some great dances, some great talent. So let's gear up for a beautiful start of the show. Obviously, to praise them, we need a thunder of claps in every action. So please put your hands together for our little champions. And here we go, declaring the dance competition results for the grade 5 and 6. The first consolation goes to Ishika Taure of 5th A. तेरे बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे, चूड़ियां मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। The second consolation goes to Subham Karotkar 6B. अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। The third prize goes to Shrananya Kanade of 5th B.
छुप देखे आंखों में जाके दिल में क्या क्या शुरू करता है रात बोलता है दिल में क्या क्या शुरू छुप देखे आंखों में जाके दिल में क्या क्या शुरू मुझे बता जरा कहता कि इश्क करके अरे बाय 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 बाय. The second prize goes to Shravani Sharma of 5th B. डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ मैं नाचूं तू नचा. And the first prize goes to Harshali Kokare of 6A. खिंच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा सोने उतर टंगी रख Coming to the next category of grade 7th and 8th, the consolation prize goes to Saloni Chauhan of standard 8B. The third prize goes to Mahek Darji of 7th B. क्यों न जाए तू हो री रे रसिया खिलने क्यों न जाए तू हो री रे रसिया पूछे है तो वे सारी खुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगाते चार ठुमके छिछोरे नाचे जमके यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े. The second prize goes to Sanchita Gade of 8th B. And the first prize goes to Bhumi Guge of 8th A. Takatang. Dagin.
Prachi Miss, please declare the results for 9th and 10th. Now we move on to the next category of standard 9th and 10th. Consolation prize goes to Vedanti Chalke of standard 10th A. Consolation prize goes to Rashi Devatwal of standard 9th B. Like pink in your area. Like pink in your area. I know I am, and I'm so hot. I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. With it pop, coming with the night, bada boom. Take that stuff, you do got the dough. With the number to the code, we got pop, pop, pop. Pop, pop, bada, bada, pop, pop, pop. We do not be a troop, better ta, ta, ta. Hands up, dance on the bottom for the minute. Nigga, holla, man, it's the nigga, naya. The third prize goes to Misbah Sheikh, standard 10th A. The third prize goes to Aditi Parmar, class 10th B. आशिक बनाया आशिक बनाया तूने आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया तूने The second prize goes to Rashi Bhuriwar, standard 9th A. मोरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया मोरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया मोरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे जाके यशोदा से and Sairaj Boir of class 10th A. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये
The first prize goes to Varat Kadam, class 9th B. And Pratiksha Nirmal, class 10th A. क्या बात है। तो ऑडियंस, कैसी लगी आपको हमारे बच्चों की डांस? तो हो जाए ढेर सारी तालियां। These performances were mind blowing. Even I don't have word to express how they performed, and it was just amazing, wasn't it? Yes, Prachi Bells, it was really outstanding performance. They really made our day. यार, मैंने सोचा था कोई छोटी सी एंकरिंग करनी होगी, पर डांसेस तो थे ढेर सारे, तो तारीफें तो बनती हैं। सच में बच्चों, डांसेस तो थे एकदम झकास, एकदम धमाकेदार, स्वीट, चार्मिंग, मस्त, वस्त, स्टोरी, शोरी, जैज, वैज, बूगी, वूगी, वाव, वाव, जैम, रैम, शेक, मेक, फ्लिप, शिफ्ट, टर्न, टम्बल्स, रॉक, शॉक। यार, ये स्क्रिप्ट है या ब्रेथलेस रैप? कौन है यार स्क्रिप्ट राइटर? बुलाओ जरा। हम जानते हैं आप है बेकरार, पर सिर्फ कुछ पलों का इंतजार, और फिर शुरू होगा ये शो एकदम धमाकेदार। तो अब देखते हैं ड्राइंग के रिजल्ट्स इस बार। सरोज सर, व्हाट इज ड्राइंग? Drawing, it is an amazing way of displaying emotions. Nowadays, it is far too often that people feel that they have to hide their emotions or do not know ways to spend their valuable time. Drawing is a hobby and passion that can be a positive outlet. The colors they use and the things they draw are a great way for kids to express their feelings. Declaring the results of the drawing competition held for grade 5 and 6. The consolation prize goes to Idrisi Mohammad Samir.
The third prize goes to Shakshi Bambarkar. The second prize goes to Zaid Syed. And the first prize goes to Naitik Chintakindi. एक बार एक मूर्तिकारक एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकारक ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लेते हो तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे, दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन को आएंगे, दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होकर बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, चले जाओ, मैं अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सह सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं यहाँ पड़े रहकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, मूर्तिकारक ने समझाया। पर पत्थर पर उसकी कोई बात का असर नहीं हुआ, वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही एक दूसरा अच्छा पत्थर दिखा, उसने उसे उठाया और मूर्ति बना ली। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया, वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे, दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आने लगे। फिर एक दिन और पत्थर उस मंदिर की ओर लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकारक को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह मन ही मन पछता रहा था कि काश उसी वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता। कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से बचा लेती। दोस्तों, इस कहानी के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे लिए निर्णय लेने का यही समय है कि हम आज दर्द बर्दाश्त करना है, हमें अभी मौज मस्ती करनी है और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज आप जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, जिस किसी भी खेल में एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अपना 100% एफर्ट्स लगाइए। होने दीजिए अपने ऊपर तकलीफों के वार, हार मत मानिए। उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए।
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़िए ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट न सहना पड़े। Declaring the results for the sculpture making, the consolation prize goes to Prathamesh Dhanavade of Standard 8B. The third prize goes to Krishi Vegda of 7th A. The second prize goes to Raina Kohli of 8th B. And the first prize goes to Daksh Kataria of Standard 8A. Students, now declaring the poster making results for Standard 9th and 10th. The consolation prize goes to Prathamesh Bhosle of 9th B. The third prize goes to Ria Parab of 10th B. The second prize goes to Nidhi Pote of 10th A. DJ Asif SK. And the first prize goes to Ayushri Panchal of 9th B. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाँ कुछ करिए बस बस बड़े बोले, अब कुछ करिए कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Thank you, Miss, for such lovely song. All work and no play makes Jack a dull boy. This probe highlights the importance of playful activities in our daily life. Life is also just like a game. Sometimes you win and sometimes you lose. Participating in various games and sports develop a feeling of sporting spirit. In sports, the participating candidate can win or lose, but never lose your participating spirit. Yeah, now we are announcing the results of the fitness challenge for the standard 5th and 6th. In the girls category, the third prize goes to Sara Awadh of standard 6B. The second prize goes to Shriya Parab of 6A. कुछ
कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए And the first prize goes to Tejaswini Dunwale of Standard 5th B. फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया In the boys category of Standard 5th and 6th, the third prize goes to Rahul Varang of Standard 6A. The second prize goes to Sanskar Zambre of 6B. खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के And the first prize goes to Bahusagar Anchan of Standard 6A. Now we are moving to the second category of the fitness challenge, that is Group 2 of Standard 7 and 8. And in the girls category, the third prize is bagged by Saloni Chauhan of 8B. कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए The second prize बेतरिए या goes to Dikshita Jaitapkar of 7A. And the first prize goes to Zubia Sheikh of 7A. In the boys category, the third prize goes to Tanish Bage of 8B. The second prize goes to Om Rane of 7th B. उमंगों में खेलों के मेलों में And the first prize goes to Shubham Toraskar of 8th B. ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी हो Now in the group 3 of standard 9th and 10th, announcing the fitness challenge results for standard 9th and 10th. In the girls category, the consolation prize goes to Kavya Jain of standard 10th B. बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे The third prize goes to Riya Parab of 10th B. The second prize goes to Vedanti Chalke of 10th A. And the first prize goes to Prachi Borade of 10th B. And in the boys category, the consolation prize goes to Sumit Parmar of 10th A. The third prize goes to Vinayak Arya of 10th A. The second prize goes to Rajiv Kadam of 9th B. And the first prize goes to Tanmay Tirmal of 10th B. Saroj sir,
दुनिया में कितनी भी भाषाएं हो जाए, लेकिन संगीत से अच्छी कोई भाषा नहीं हो सकती जिसे सब समझते हैं। संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी तो दिल पर होती है। वाह 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 मिस, तानसेन प्रवेश है तुम्हारे अंदर शायद। जी हाँ औरंगजेब बादशाह, अब आपकी इजाजत हो तो संगीत के विनस के नाम पढ़कर सुनाएंगे। इजाजत है तो फरमाइए बादशाह। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। I'm very happy to announce the result for the singing competition for the grade 5th and 6th. And here the second winner is Vineet Vinjoda of standard 6A. And the first prize goes to Honar Kanochia of standard 5A. Coming to the second group, that is of grade 7th and 8th, the consolation prize goes to Yash Tawde of 8A. The third prize goes to Priya Arola of 8B. The second prize goes to Jatin Parmar, 7th B. And the first prize goes to Saloni Chauhan of 8B. Coming to the next category of grade 9th and 10th, we have got the third prize going to Shruti Rathod of 10th B. The second prize goes to Varat Kadam of 9th B. And the first prize, any guesses? Yes, it goes to none other than Triveni Varma of 9th B. We are towards the end of the program. Umang not only gave platform to the dancers, painters and singers, but it also gave the scope to the students to show any hidden talent they have in them. And to our surprise, our children came up with such amazing talent. Yes, Prachi miss, it's very true. Children are really talented. We just need to show them the right path and they will bloom like a flower. Such talent programs have the basic intention to make the children aware of their talent and even opt for that profession to earn their livelihood, so they can actually enjoy what they are doing. And now declaring the results for the talent hunt in the first category of standard 5th and 6th. The consolation prize goes to Samarth Boyd of standard 5th A. The third prize goes to Aryaman Bhandarwar of standard 6B. The second prize goes to Manish Gupta of 5th A. Now I am going to invisible the coin. See, it is coin. Finish. And the first prize goes to Shubham Kharetkar of 6B.
Announcing the result for the talent hunt of the second group, that is of standard 7th and 8th. The third prize goes to Rajveer Helia of 7th A. The second prize goes to Raina Kohli of standard 8th B. And the first prize goes to Rudra Solanki of standard 8th A. No man, let's go ahead. Same thing. I think they are scared of me. My prey is coming towards me. What you thought? We are scared of you? No, we were planning about how to control you. Now, we have two powerful solutions to control you. No! You all can never control. Coming to the last category of standard 9th and 10th, the first consolation goes to Shiza Bachu of 9th A. The second consolation goes to Rajiv Kadam, 9th B. The third prize goes to Ankit Behre, 10th B. Club is the best place to find the lovers at the bar anywhere I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now we see. The second prize goes to Vikas Shukla of 10th A. सुनो यह कहानी कोरोना वायरस की महामारी। एक सुबह कोरोना वायरस को मजे लेने के लिए सूझा और ये सोचते हुए उसने रोना से कहा, अरे रोना, मजे लेते हैं आज, चलो ना इंडिया के लीडर को कनेक्ट करो ना। हेलो हेलो, हु इज देयर? मुझे नहीं पहचाना? चाइना, इटली, स्पेन, अमेरिका, सारा वर्ल्ड मुझे कोरोना के नाम से जानता है। स्मार्ट बॉय, लॉकडाउन तो तुम्हें घर से निकलने नहीं देगा और इन्फेक्शन तो तुम्हें जीने नहीं देगा। हा 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 हा। कोरोना की डार्लिंग मोना, बोलो ना, अब इंडिया का क्या है होना? माइकल, तेज करो इन्फेक्शन का साइकिल ना। हा 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 हा। खामोश, ना इसे इटली, स्पेन या वुहान कहते हैं। जहां मरेगा तू अपने वायरस की मौत, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। And the first prize goes to Sonali Kamble of 10th B.
से गई है मेरी जिंदगी। दुपट्टा ओढ़ के रहती हूँ मैं, बहनचली हूँ मैं। शर्मा का आज मैं खासकर उस इंसान से और आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, देख जिंदा हूँ मैं, खुश हूँ मैं। तूने मुझसे मेरी खूबसूरती छीनी थी, लेकिन मेरे मजबूत इरादे वो मेरी अमानत है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हिम्मत तब की थी ना, हिम्मत तब की थी ना तुझे ना बोलने की। हिम्मत आज भी करती रहूंगी, हिम्मत आज भी करती रहूंगी। Before we propose the vote of thanks, I request our principal, Madam Mrs. Maruk Daruwala, to guide us and share a few words of wisdom and encouragement with us. Congratulations to all the students who had participated during the Umang Festival Week and those who were selected for the best performances. Parents, such participation is very important as this only taps and bring out the hidden talent and creativity present in your child. And slowly, year after year, such participation helps them to groom and improvise under the able guidance of our teacher. In short, students get one more avenue, or you say field, to make for their future and achieve success in their future. So parents and students, participation allows the child to know themselves, and knowing themselves is very important. That can happen at school level, which allows them to try every level of scope as per their likes and dislikes and achieve their targets later and set with their goals. So students, without your involvement, you can't succeed, and surely with your involvement, you can't fail. Once again, congratulations to all the participants and prize winners, and a big thank you to all the parents, especially as without your support, this online event wouldn't have been a success. A big thank you to all the teachers and judges, as with their efforts, this Umang Festival stands as an unforgettable online event. Thank you very much once again, and I wish you all a very happy Diwali. Thank you, madam, for your lovely words of encouragement and always being so supportive and cooperative. A special mention to our respected principal madam, Mrs. Mahrukh Daruwala, for being a catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. With a deep sense of appreciation, we thank our loving principal ma'am for her untiring efforts. I am immensely thankful to third officer of NCC, Mr. Vishal Jagdale sir, for his efforts towards his own ideas and elegance of explanation of everything. I need to mention my deepest sense of appreciation to him. Thank you, sir. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for detail. We have been fortunate enough to be backed by Mrs. Geeta Suram, the dedicated staff of her institution, who is well versed in her job and who worked behind the scene to make this event happen. I also extend thanks to all the staff members for the enormous cooperation within the organization of this gala event. I'm short of words for the involvement and the willingness to take on the competition of tasks beyond their comfort zones. Our sincere gratitude goes to all parents and our well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children were not being able to achieve excellence. Thank you so much for being the part of Umang Festival. Finally, I would like to thank our budding rock stars that made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident
in your ACT students. All the programs were very good and were enjoyed by each one of us. And before we come to an end, I would like to thank and appreciate the efforts of these three parents. Not only students, but some of the parents also participated in the Umang festival. I would like to extend my thanks to Mrs. Karatkar. I also would like to thank Mr. Kaushik Chaurasia. And I also would like to thank Mrs. Chauhan for their mind-blowing performances. बाबा मला कळलेच नाही तुझ्या मनी वेदना कशी मीरा बोल कुठे जाऊ मला काही समजेना साधही घालते लाडकी तुला जगण्या तू दिला माझ्या जीवा अर्थ खरा बाबा. Last but not the least, a big thank you to each of you who made this Umang Festival Prize Distribution event a memorable for all of us. On behalf of my school, let me thank all students of Sir C.J. High School to be disciplined and honored. Our school students are not only good at academics, but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Thank you and God bless you all.